Well, if you're a Lahore Qalandars fan, you'd be absolutely delighted with this victory, ending on a team hat-trick bowled by Sikandar Raza. What an incredible performance from Lahore Qalandars, bowling out a side for just 90 runs to get an emphatic win, which sends them to the top of the table in the HBL PSL 8. A really comprehensive performance from Lahore Qalandars. They won the toss and elected to bat first, posting 200 runs. Abdul Shafiq, Fakir Zaman and Billings all chipping in with the runs there. Sikandar Raza 23 off 10. And in return, Islamabad, well, they could only post 90. Gabaza Maro got things off to an okay start. They were going at 10s until over 4. And then the wheels completely fell off with David Bisa 3 for 17, the pick of the bowlers. And we're absolutely thrilled to have the innovator of that team hat-trick, Sikandar Raza, alongside Simon Dool and I today. Sikandar, what an absolutely incredible win. Can you walk us through the feeling in that final over? You knew you had them on the ropes, and then you just cleaned it all up yourself. I'll actually tell you a funny story. So I said to Shaheen when one of the guys came and I said, Shaheen, can I please have a mid-wicket? I don't want to give him an easy one. And he said, yeah, sure. And the next thing I know, he was starting in leg sleep. And I looked at him and he said, don't you worry, just bowl. So, you know, that's what happened. But it tells you about the mindset that we have as a team. And it tells you about the mindset of our captain, Shaheen, that we're always looking for wickets when we sniff. We knew that when we see a little bit of opening, we're going to go through that door. And we believe in the bowling unit that we have. And I think today was a great example of that. Talk me through this. What was this all about at the end? So before the game, Rashid and I were working on little grips, and I said to Rashid that there's something about the googly that it's coming out of my hand really okay, but it's not turning as much as I want. I just get a bounce, and Rashid just tweaked a little bit. So when I saw Rashid and I said, Rashid, that really worked really well. So I was just thanking him for all his knowledge and help. Why the behind the back? Well, where did that start? Where did that come from for you? I mean, it's different. It's very much like Sunil Narayan. We've seen a lot of him over the years. Yeah, so for me, because I had multiple surgeries on my shoulder, I lost a lot of strength in my arm. And I didn't think I was going to be successful in international cricket as a batter only. And for me to take Zimbabwe cricket forward as well, I thought just taking Zimbabwe cricket forward as a batter would have been a very difficult ask. So I wanted to remain as an all-rounder. And I was part of CPL, so all these ideas came from Sunny Bhai for sure. But the main reason was because I lost a lot of strength in my arm. I couldn't get my hand higher. So I started bowling like that, so I have a little bit pace behind my ball. I think it's absolutely terrifying as a batter if someone's running up to you and you cannot see exactly what's going on. Is it which arm is it in? Who knows? I love that as a diversionary tactic. But I mean, what an incredible career that you've had and what you're doing for Zimbabwe cricket, and you're playing in franchise cricket all over the world. Can you sort of pinch yourself sometimes and think about how far you've come and what an impact you're making worldwide now? Like you're in demand. You're playing tournament after tournament. How's that feel? Listen, it is very humbling, the fact that the cricket is growing for me, and I'm getting better with all the knowledge that I receive from and all the experience that I receive from different countries. But instead of thinking how far I've come, I've always thinking how far I have to go and to take my country. That sort of keep me focused, humbled, grounded, determined. So, listen, I think last year Zimbabwe made a lot of great news, a lot of them, and I'm really grateful and I'm really humbled by that as well. But it's one thing to come as far, but I still believe we have a long way to go. So I'm always looking up how far we have to go, so that there is respect for Zimbabwe in world cricket, so that we do really well against every time we play, so that everybody remembers when Zimbabwe plays and we can entertain them. You look through teams like the Qalandars that you're playing in right now. What do you take away from guys like Shaheen? What do you take away from Rashid that you can take back? Playing in these tournaments, you're one of the few from Zimbabwe that's able to do it. What do you take back to that dressing room? Yeah, so I'll give you a good example of, like I was telling you, that I've seen a lot of fifers in my career. I've been part of it, and I've had oppositions had a lot of fifer against the team that I've played. But given the conditions that we had yesterday, Shaheen Fifer was one of the world-class fifers I've seen. Because of the conditions, a wet ball, not much happening of the wicket, and still he managed to produce that spell to basically blow the opposition off. So I think these are the things I learned. I speak to him how he's managed to do that, so that I can speak to Richard Garava, so that I can speak to Blessing Mujrubani, so that I can speak to the guys who bowl quick for Zimbabwe and share all that knowledge. And what can I say about Rashid? Since Rashid has come, we've been basically spin twins every time we do our warm-ups together. When we're doing our throwdowns, we do our throwdowns together. He asks me batting questions, I ask him bowling questions. And today was a great testament of things we've been working on, and the way
the fact that I managed to execute well, I think it's humbling for me, but he was a lot more happier for me than I was for myself. The mini helicopter that I mean, look, I'm not going to give him the full helicopter. He's no Mahendra Singh Dhoni, but that little flourish that Rashid's got, I mean, that's quite cool. Yeah, I'm not going to try that. That is not for me. I can tell you that. So listen, I think this is the second partnership we've had with a strike rate of 200 and plus. So we are batting really well together. We run really well together as well. And these are the little things that we need sometimes. But one thing I'll tell you, there was a 4 through his legs. That was unbelievable. But he actually said that to me, Raza, I'm practicing that shot. I'm going to hit that in this tournament. Said that. No, I meant to do it. No, but he said that before this. We were doing nets one day and he was practicing. He said, Raza, that is a shot. I think I'll play. I'm going to practice that. And he played it today and I said, listen, it only took you 3 days to execute that. You talk about how far you've come and how far you've got to go yet. How many more years? I mean, you've still got all your shoulders okay now. You're 36. Yeah. I mean, can you keep going? Do you want to keep going for as long as you can, surely? No, not for as long as I can, to be honest. I think the time that I'm not recovering in time, the time I think I cannot give 100% to my team, I think I don't want to drag my career just for the reason because I can keep going. I wanna play because I deserve to play, not because I'm one of the names and people like, yeah, you know, he's got experience. I still have to perform. Lastly, I think for as long as I'm enjoying, I've got a very good relation with Zimbabwe cricket going on as well, so I'm enjoying my national cricket. I've been very lucky and blessed to be part of great franchises over the last few months as well, so I've enjoyed every single franchise that I've been to, and we've made great relations. So yeah, I'm not going to put a number in it, but yeah, I don't think so. I'm one of those guys who's going to just drag his career because he can. Yeah, I'm not going to do that. Oh, no time yet then, we hope. You've been absolutely incredible today once again. Thank you so much for joining us. We will let you go and celebrate that cracking win with your team. And yeah, thank you so much for your time. Thank you for having me on the show. All right, well, the master blaster of tonight, no surprises who that one is again. Abdullah Shafiq, he was just brilliant again tonight. 45 of just 24 balls, a strike rate of 187. Gosh, 4 fours and 2 sixes. Just belligerent batting from him once again today. He and Sam Billings partnered together to really take the game away from Islamabad United and put together those 200 on the board. Sikandar exits, but we're joined by Waqar Younis, who's made his way down to the pitchside studio. Waqar, a brilliant win, wasn't it? Yeah, I mean, I was very amazed and really surprised the way Sikandar was talking here. He was very blunt, he was very honest. Good to hear from him. I mean, it was a one-sided affair at the end, but it was the first inning, I think. Islamabad United, they didn't look like what they normally are. They were just all over the place. They really started poorly, you know, starting with the youngsters, Amir, and then the spinner. I mean, they should have gone out with their, you know, full throttle and the attack with Hassan and Tom Curran and try to pick up early wickets, which they didn't, and now they have to suffer. Absolutely, and if we take a little look at tonight's start attack, gosh, this is one to remember. Such a comprehensive win that was by the Qalandars. It's the joint second biggest defeat of the HBL PSL history. 110 runs they won by there. As you can see, second on the ladder for that 2023 spot. The only one better was 117 runs, which Multan was the winner, but it certainly is a night to remember for Lahore Qalandars. They certainly batted absolutely brilliantly, but I think dually the bowling attack really was just credit to them today. Wickets all throughout, all of the bowlers. Yeah, under the pump, the Islamabad side, I think from the outset, the way they batted was fantastic. To put 200, I thought it was above par. I said in commentary, I think it was a little bit above par tonight on that particular surface. But their bowling attack, 41 without loss. I think Islamabad at one stage inside the fourth over. They looked like they had sort of really got away to a great start. But then it was just difference. David Visa comes on, cross seamers into the surface, slower ball, something different every time, which Waqar talked about in commentary. They've got the best bowling attack in the competition, I think. It ticks all boxes for me. Pace,
genuine spin, and as Sikandar said, now Rashid has joined them a couple of games ago. It's almost like, good luck, good luck. It doesn't look like there is any weak link at all in the Lahore Qalandars, but plenty more, of course, to unpack on the other side of this break, so do stick with us here at the Pitchside Studio. Welcome back, and here we are. I'm here, and thank you to Erin. Now talking more about match 16 and a bit of an anticlimax. Well, you live by the sword, you die by the sword. Islamabad United knows one way, and that is to attack. And there are moments, and there will be in future games, that they might not get anything on the board, and today was that day. But so important, when you talk about Lahore Qalandars and their foreign selections, or you talk about the overseas selection, there are certain investments they've made from season after season, and it's now the time that they're reaping rewards. And one of them, Dooley, is David Visa, a man who you can count on with a ball, with a bat. And as I said earlier, that he also is the guy who leads the chat in that huddle. Yeah, brilliant. In the field as well. Look, as an older statesman in any side, he is a much sought-after T20 player internationally, anywhere around the world, in most of these franchise tournaments, and he never, ever fails to deliver in one way, shape or form. Let's just endorse that through his player of the match, and those are his wickets and performance. Tall man, you know, and when you have this variation in the pitch, he will be handful, and that's exactly is shown today. See the bounce he gets. He's what, 6'4", 6'5", and his variation is amazing. Cross seam, good bounce, and then the Yorker. Brilliant. And this team is right on top of the table, and not just because of one man. It's about a collective effort. The team captain leading the way, and then, as I mentioned, overseas players. You got Rashid Khan performing with the ball. As soon as he's come in, he's added that fizz in their spin bowling and overall as a bowling unit. Yeah, look, 5 wickets last night for the skipper, none tonight. Rashid goes for 40-something, whatever it was last night, picks up wickets tonight and is miserly. Sikandar Raza, we've just had him. What a lovely gentleman he is. Bat, ball, Visa, bat, ball, Billings. What a great addition he's been, you know. Like it's just been Abdullah Shafiq. I mean, we can talk about to a team man, they have been brilliant across the board. They're getting performances from individuals time and time again. They're just a good look inside. It's the best bowling attack in the tournament for mine. Yeah, they have match winners, isn't it? They're individual match winners. Yes, they're working well together as a team also. They gel well, and they've been playing for a while now. You know, Rashid has been coming to Lahore Qalandars for the last few seasons, so they gel well. They understand each other really well, and I think the owners are really, you know, giving that that comfort they look for, and they look a very, very dangerous side. They're the one will be challenging this trophy. Yeah, and they do look like a side which will challenge because they're right on top of the table. Speaking of Rashid Khan, as soon as he arrives in any league or any team, they just get switched on. I mean, speaking of switched on, the switched on moment has to have him somewhere. Well, we've talked about it. Here's a look at it. It's the mini helicopter. It is unbelievable. I know who was on commentary, can't remember. They said the sound was amazing. You knew where it was going. Sometimes it just gets impossible to describe those shots when he's playing them, and where do you just bowl to him? I mean, he just drags it from out of nowhere. Yeah, he's a strong individual. Remember that. I mean, you can tell in his bowling also when he bowls those flippers, bowls those googlies. You know, his pace on the deliveries are really, really fast. And when he hits it, and same power comes through. He doesn't really give you all that big follow through. It's just all that boom. So, I mean, he's a wonderful striker. He's a great addition in their side. And batting at number 7 or sometime at 8, they've got such a strong batting lineup. So that's a big advantage. It is indeed. Well, time for us to take a break. Simon, we'll give you leave for a couple of days. Enjoy yourself. We'll come back in a moment. वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो। हम बात करेंगे इस मैच की जो कि मैच 16 था इस HBL PSL 8 का, और हमारे साथ मरीना आ चुकी हैं। मरीना, इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करें, 90 पे ऑल आउट हो गए, लेकिन कोई पछतावा नजर आया नहीं क्योंकि उनको लगता है कि चलेगा, ऐसे ही सही है।
देखिए, एक उनकी माइंडसेट है और ऑब्वियसली बात ये है कि जब आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड दोनों चीज़ें होती हैं। एट टाइम्स चलता है, एट टाइम्स नहीं चलता। लाहौर के खिलाफ बॉलिंग भी एक तो ऑब्वियसली उनकी बहुत तगड़ी थी, पर पिच आज थोड़ा सा उस तरह का नहीं था जो एक पर्सपेक्टिव बन गया था पहले ही मैच में। थोड़ा सा रुक के खेलना था, रुक के आ रहा था, बाउंस और पेस डबल थी। तो बट आई थिंक वही बात शादाब ने भी बोली कि वी विल जस्ट लिटरली फॉरगेट कि हमने लाहौर के खिलाफ खेला है। बट थोड़ी सी इनको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हर बार इनकी चीज़ें फेवर में नहीं जाएंगी, तो बीच में थोड़ा सा कोई एक ऐसे बैटर को लाना पड़ेगा या कोई माइंडसेट ऐसा लाना पड़ेगा जो एट टाइम्स मुश्किल कंडीशंस में कैरी ऑन करना चाहते हैं। आपने यही एक बात कही, रुक के खेलना पड़ेगा, वो तो वही तो नहीं होता। रुक के कैसे खेलें। चले, अपनी बात कर रहे थे विकेट्स की, तो एक कहते हैं ना कि लाइन लग गई थी गुरबाज और मनरो की ओपनिंग के बाद विकेट्स धड़ाधड़ गिरी। लेट्स हैव अ लुक एट द फॉलो विकेट्स। जहाँ तक बॉलिंग की बात है, लाहौर ने ऑब्वियसली अच्छी एक्यूरेट बॉलिंग की। ये गुरबाज पहले डबल माइंडेड रह के खेलने लगे, फिर शॉट रोक लिया और बहुत ही शानदार एक और कैच फखर जमान ने लिया। जहाँ तक फील्डिंग की बात है, ज़बरदस्त रही है और ये थोड़ा सा फिर जल्दी कर गए थे, थोड़ा टॉल हो गया था बॉल इन पे। डेविड वीज़ा भी वही बात है कि कोई ना कोई इन पे पिकअप ज़रूर कर लेता है। एक और अच्छा उम्दा कैच था, थोड़ा सा फंस रहा था। ऑन दी अप ड्राइव खेलना आसान नहीं थी और क्योंकि टारगेट इतना बड़ा था, रिस्क लेना था। एक और अच्छा कैरी हमने देखा था, हालांकि थोड़ा सा डबल बाउंस नज़र आया। राशिद खान ऑब्वियसली आई थिंक ये बहुत थोड़ी सी लूज शॉट थी, सीधा खेलने चाह रहे थे लेकिन सारा प्रेशर उनका जो बैकफुट पे था। ये बहुत बड़ी विकेट थी और आई थिंक आज़म को ये शॉट अपनी बुक से निकालनी पड़ेगी। एक और ब्लाइंड हीप टॉम करन का, अगेन राशिद खान के खिलाफ इस तरह की शॉट्स आपको थोड़ी सोच के करनी पड़ती हैं। रनआउट्स भी हुए, मतलब जो चीज़ इस्लामाबाद के लिए गलत हो सकती थी आज हुई है। और सिकंदर रजा ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की है। अच्छा स्किड हुआ बॉल, बैकफुट पे स्पिनर के खिलाफ हमेशा खतरा होता है और ये तो प्लम आउट था। बता देनी पड़ेगी इब्रार को कि उन्होंने रिव्यू किया। बॉलिंग हैज़ बीन ब्रिलियंट। वकार यूनुस से हम जल्दी से पूछते हैं, हमने देखे फॉलो विकेट्स, 10 खिलाड़ी आउट हुए, इनमें से कितने आपको ऐसे लगे जो विकेटें दी गई हैं, ली नहीं गई? देखिए, शॉट सिलेक्शन ख़राब थी। जो मैं समझता हूँ कि जैसे अब सपोजिंगली आसिफ की विकेट थी, गेंद आगे गिरा हुआ था, पीछे आप हो के और आप कोशिश कर रहे हैं कि गेंद को मैं बाहर फेंक दूँ, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू शिफ्ट योर वेट, और वेट उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। इवन आज़म खान की विकेट, आई थॉट दैट वाज अ पुअर सिलेक्शन शॉट की। हमें अच्छा, पिछले मैच में इतना उम्दा खेलने के बाद आपने इस तरह का शॉट खेला, आपने बेस नहीं जज की। तो आई थिंक ये मरीना से मैं एग्री करूंगा कि आप ठीक है, आप एक अटैकिंग क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं और आपको खेलनी ही चाहिए। T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट दैट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप क्रंच मोमेंट पे आके फंसेंगे तो आपके पास ऐसे प्लेयर कुछ ना कुछ होने चाहिए जो कंसोलिडेट कर सके, जो रीबिल्ड कर सके चीज़ों को। अगर रीबिल्डिंग को नहीं आती होगी तो फिर आप इस तरह मैचेस हारेंगे और आप फिर क्रूशल वक्त मैच हार गए तो फिर आपको अफसोस होगा। रासिब एंडरडूसन शायद हैं इस रोल में, लेकिन वो क्योंकि जल्दी आउट हो गए और उसके बाद बाकी सारे ही पावर हिटर्स हैं। बट एनीवे, हम बात कर रहे हैं इनकी। अब ओवरऑल हम देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में जब हम देखते हैं HBL PSL में, तो बॉलिंग की क्वालिटी बहुत हाई होती है और उसमें हमेशा हमने देखा है कि बहुत सारे बॉलर्स हैं जो 140 प्लस कराते हैं। इस टूर्नामेंट में एहसानुल्लाह और हारिस रऊफ जब एक्शन में नजर आए हैं, उनका नाम आया है फास्टेस्ट डिलीवरी में। आपने एहसानुल्लाह का नाम लिया है, एहसानुल्लाह भी बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं। हारिस का हमेशा जब भी खेलेंगे ये वाला प्राइस तो वही जीतेंगे। कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता जब आप परफॉर्मेंस देते चले जाते हैं एज ए टीम, तो यूजुअल सस्पेक्ट सामने आते जाते हैं। हारिस रऊफ से तेज तरीन बॉल की तवक्को है और पिछले कोई 2 मैचों से फखर जमान ज़बरदस्त कैचेस पकड़ रहे हैं, डाइव लगा लगा के आखिरी वक्त पर। तो अगर हम बात करें सेफ हैंड्स की, तो आई थिंक इस टीम के सेफ हैंड्स जो हैं वो फखर जमान के पास है। कल पीछे भागते हुए इन्होंने कैच किया था, वो भी बहुत मुश्किल था, वे जा रहा था और ये बिल्कुल बलून अप था। स्प्रिंट लगानी पड़ी और जो एंड टाइम पे इन्होंने डाइव की, एक्सेप्शनल कैच था ये। और ये टोटली विकेट जो है वो फखर जमान की थी। और इस तरह की अगर फील्डिंग हो रही हो तो बॉलर्स का और ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है उनको। अच्छा, जब ये हो रहा था रियल टाइम लगा फखर जमान आराम आराम से आ रहे हैं बॉल के नीचे, लेकिन वो जो इनका फॉर्मर नेवी का जो इनका वो है डाइव,
जो है इनकी पक्की होती है, वो सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। नहीं, डाइव नहीं, थोड़ा गेंद दूर था उनसे, लेकिन अच्छी बात फ़खर की ये है कि फ़खर जब भी कैच करने जाते हैं वो थोड़ा अपना टाइम लेते हैं, तो उसको जज करते हैं पहले। आई थिंक इट्स द राइट वे टू गो। कई दफ़ा आप रश करते हैं ना, तो फिर आपके सर ज़्यादा हिल रहा होता है, तो आप फिर जज नहीं कर सकते, फिर आप कई दफ़ा दूर हो जाते हैं या कई दफ़ा ज़्यादा नज़दीक हो जाती बॉल। तो आई थिंक उनके जो हैंड्स पे तो कोई है ही नहीं ना, शक ही नहीं है कि सेफ हैंड्स हैं। स्लिप में भी कैचेस इन्होंने अच्छे कर रखे हैं, तो आई थिंक उनको पता था कि मुझे टाइम लेना पड़ेगा, बॉल को जज करना पड़ेगा, फिर मुझे थोड़ी डाइव भी लगानी पड़ेगी, तो कोई मसला नहीं। अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात हो रही थी मरीना शाहीन से, मैंने कहा जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो, जीत भी मिल रही है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से एरिया को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आपकी नज़र में कोई ऐसा पॉइंट है जो आप कहें लाहौर कलंदर इसको और फाइन ट्यून करें? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिसाइज करें तो आई थिंक अगर कल के मैच में भी देखें तो अपोजिशन ने ऑलमोस्ट 200 स्कोर कर लिया था। आज भी ये ज़्यादा आप ब्लेम कर सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि शॉट सिलेक्शन बैड थी, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग नहीं हुई। आई थिंक थोड़ा सा बीच में एक्सपोज होंगे ये। अर्ली ऑन 30 रन बन गए थे 3 ओवरों में। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑन द बूस्ट जब अच्छा जा रहा होता है पीछे से कवर हो जाता है, आप नहीं सोचते। बट अगर कोई तगड़ी टीम जो मोमेंटम ले गई तो फिर थोड़ी सी बॉलिंग पे इनको आई थिंक जो एरियाज हैं जहाँ पे कर रहे हैं, आज शाहीन बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे थे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी उन्हें क्लीन पिकअप करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस एंड आ रहा है आपके पास मार्जिन बहुत कम होता जा रहा है। अभी तो बैटिंग इतना पोस्ट कर रही है कि कुशन है बॉलर्स के पास। बाकी जो 5 टीमें वो गौर से सुन रही थी कि कोई तरीका बताएंगी मरीना कि कहाँ इनकी कोई कमी है इनके अंदर, फिर भी अभी पूरी तरह से नजर नहीं आया। कहीं देखेंगे क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कुछ फैंस से मुलाकात करवाएंगे और फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मसालेदार हैं, सो डोंट गो अवे। एक बार फिर खुशामदीद पिच साइड स्टूडियो में मेरे साथ वकार यूनुस और मरीना है। बात करते हैं कि हमने कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। अब ये लाहौर आए हैं तो यहाँ दोनों मैचेस में ऑलमोस्ट फुल हाउस। कल तो कोई बिल्कुल जगह नहीं थी, आज भी वकार ने बताया कि ऑलमोस्ट फुल हाउस था और इतने ज़्यादा लोग आए। टिकट सस्ता तो नहीं है यहाँ बाकी शहरों के मुकाबले में? मेरा नहीं ख्याल सस्ता है, और यहाँ पे आपने सुना ही है ना, सेठी साहब ने, चेयरमैन साहब ने कहा है कि पास नहीं मिलेंगे, हाँ, और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सो अगर इतनी टिकट बिक रही है, ओवर 27,000 27,000 से ज़्यादा आज लोग थे। कल मेरा ख्याल है पहला मैच था तो 35 से भी ज़्यादा होंगे। 35 तो इसकी ऑफिशियल है ना, तो जो लोग आइल्स में खड़े होते हैं वो दैट मेक्स इट नियरली 40। सो पैक हाउस, वेल डन लाहौर, सो ग्रेट जॉब, कीप कमिंग। अच्छा, आप लोग खेलते हैं क्रिकेट, आपने खेला इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये बताया कि कितना फर्क पड़ता है कि जब क्राउड आपको बैक कर रहा हो, आपकी जो एबिलिटी है एज अ प्लेयर वो और ज्यादा आप कोशिश करते हैं कि आपसे 110% निकलवा लेता है क्राउड? देखिए, गेम आप खेलते हो, आप ऑब्वियसली एंजॉय करते हो, बट यू वांट एप्रिसिएशन फ्रॉम योर टीममेट्स और क्राउड एज वेल। और जब आपके पीछे क्राउड हो, आपने देखा होगा फास्ट बॉलर जब अपना रन अप लेते हैं, भाग रहे होते हैं, एंड यू कुड सी द क्राउड चीयरिंग देम, तो वो बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है इवन इन बैटिंग। क्योंकि इवन जैसे मैंने खेला था, हम लोग इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। आपको इतनी एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती है कि यू सेड कि यार मैंने हर चीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा ज़रूर करनी है। तो आई थिंक आई रिमेंबर एक्चुअली सना हमारी कैप्टन थी, एंड आई रिमेंबर कि हम जो नहीं भी डाइव वाला बॉल था ना उस पर भी डाइव कर रहे थे, क्योंकि हमें क्राउड अप्रिशिएट कर रहा था। तो बहुत फर्क पड़ा। और अगर क्राउड दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा हो तो यही चीज उल्टी पड़ जाती, परेशानी बन जाती। आज इस्लामाबाद की हालत देख ली ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल। तो बात हो रही है क्राउड की, तो क्यों ना बात करें हमारे रिंग साइड व्यू की। एंड पीपल एंजॉयड एंड दे थॉरली एंजॉयड अनदर डे। बेसिकली 7 साल से जब हम सपोर्ट करते हैं, 8 साल से एक ही टीम को, तो जब वो जीतती है तो हमें खुशी तो होती है, सबको होती है, पूरे लाहौरियों को होनी चाहिए। पिछले मैच पे जिसने बहुत धूम मचाई हुई थी, तो इस बार वो नहीं चला, बहुत अफसोस है। हम सिर्फ उसको ही देखने आए थे। PSL की सबसे अच्छी मूवमेंट थी जो ट्रैक चलते थे शाहीन शाफरीदी के। पहला ओवर जो है वो जबरदस्त है, वो कज़ाफी स्टेडियम में देखना चाहिए और कहीं नहीं मजा आएगा आपको सिवाय कज़ाफी स्टेडियम के। बैटिंग भी अच्छी थी काफ़ी, फ़खर जमान भी सही खेला है, लेकिन बाद में एंड पे ख़त्म हो गया। डेविड विज़े ने भी अच्छी बॉलिंग की और बैटिंग भी बहुत इंजॉय किया है। और सबसे अच्छा मूवमेंट वो था जब शादाब खान आउट हुए थे और वो जा नहीं रहे थे, और हारिस रऊफ ने उनको बोला कि बस अब जाओ। अपने अपने व्यूज हैं सबके, बल्कि मुझे सबसे अच्छा लगा पहला वाला जिन्होंने कहा कि एक टीम को हम 5-7 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीत नहीं रही थी, अब जाके वो रिवॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं। वो लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है और वही बात है कि एसोसिएशन कितना मैटर करती है। आप देखेंगे फैन फॉलोइंग तो ज़रूर होती है, एसोसिएशन पे फैंस को भी उम्मीद लगती है कि हम अपनी टीम को बैक कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैंस भी अपने आप को समझते हैं। और आपको पता है कि ऑफ द फील्ड भी आपस में कितनी लड़ाई होती है कि जी कौन सी टीम जीत रही। आखिर में जो खातून थी उनको बहुत अच्छा लगा सेंड ऑफ, वो जो हारिस रऊफ ने दिया था शादाब को। मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा था क्योंकि आई फील के कप्तान था दूसरी टीम का, जिस तरीके से वो सारा हो रहा था सिलसिला, आई थॉट इट वाज लिटिल बिट ओवरबोर्ड। बट ये दे आर फ्रेंड्स, दे प्ले टुगेदर, कई टीमों में खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगा जैसे थोड़ा सा ओवर कुक कर गए हारिस। You got to show some respect at some stage. I know you're friends, but there are 30,000 people watching and maybe 1 million people watching on the TV. Ah, no, that's not good. Alright, ऐसी चीज हो तो मसालेदार मोमेंट देखना चाहिए। आज काफ़ी एनिमेटेड थे हारिस रऊफ, आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन ये उन्होंने कैच करके फ़ौरन उछाल दिया। लकीली डेविड वीज़ा करीब थे और उन्होंने कैच कर लिया, वरना इस पे क्लेम हो सकता था कि कुछ सेकंड्स आपको ऑब्वियसली होल्ड करना पड़ता है। बट आसिफ अली की विकेट थी, बड़ी विकेट थी। अच्छा, आप एज अ प्लेयर देख रहे हैं हीट ऑफ द मोमेंट में, ये तो खैर गुस्सा इसमें कहीं भी नहीं था, सेलिब्रेशन थी, लेकिन ये होता है कि कुछ प्लेयर्स अपने अपने एक डिफरेंट एक कैरेक्टर होता है, एक अपना एक स्टाइल होता है। हारिस रऊफ ने आज विकेट्स भी ली, तो जिस तरह से वो जोश से अपने हाथ वाथ हिलाते, मुझे लगता है कि झटकाना आ जाए कहीं कंधे वंधे में। देखिए, आई डोंट माइंड दैट। आई थिंक जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको उनकी एग्रेशन जो होती है या उनके जो सेलिब्रेशंस होती है, आपने हसन अली को जनरेटर चलाते हैं, वो अच्छा लगता है, दैट्स गुड। आई मीन वी ऑल वांट टू सी दैट। सिर्फ मैं ये जरूर कहूँगा कि उसको ओवरबोर्ड नहीं करना चाहिए चीज़ों को, जैसे आज देखा ना हारिस का, वो आई डोंट थिंक दैट इज गुड। Otherwise, people are here to see their heroes. They are all our heroes, the upcoming stars. So they all want to see कि जी वो क्या करते हैं फील्ड पे, क्या enjoy करते हैं, जिस तरीके से खेलो hard. That's what cricket is all about. I really enjoy Haris. Haris is a wonderful character. और क्रिकेट को रिक्वायर्ड ऐसे कैरेक्टर्स की, हसन अली जैसे, शाहीन जैसे, अमीन बाबर जैसे, दे ऑल आर हीरोज, सो दे प्लेइंग गुड क्रिकेट। PSL इज ऑन द वे अप। Okay. HBL PSL is on its way up and so many great performances. Now, talking about this, 16 matches have gone by और हम देखते हैं कि कहाँ बैठे हैं इस वक्त टीम्स, और अब ये कहना शायद बजा होगा कि अब तो आधा रास्ता तय कर लिया है तमाम टीमों ने, अब यहाँ से गलतियाँ करेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। सिकंदर, ऐसा नहीं सोचा था कभी भी कि जिस तरीके का मुल्तान ने शुरू किया था, सुल्तान्स ने, कि वो पहले नंबर से हटेंगे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि लाहौर कलंदर्स ने एक तो वहाँ पे भी जीते और फिर यहाँ पे होम में आके उन्होंने अपने दोनों मैच जीते हैं और 5 मैच खेले हैं, 4 जीते हुए हैं, तो दे आर ऑन द वे अप। आई मीन इस्लामाबाद यूनाइटेड आज उनका बुरा दिन ज़रूर हुआ है, तो ये तो जो टॉप की 3 टीमें, इनकी फॉर्म बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नीचे की जो टीम कराची, पेशावर, कोयटा, ये जो 3 टीमें हैं, इनको अपने चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी, वरना देरी हो जाएगी। मज़ेदार बात यह है कि 2 मैच कराची जीता, वो मुल्तान और लाहौर को हराया। चलिए, T20 क्रिकेट में ये तो होता है। हाँ, चलिए। ओके, बात हो रही है मैचेस की, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू। और ये अभी 2 दिन का गैप है, उसके बाद इधर ही हम वापस आएंगे। हम देखेंगे कि बहुत सारी शानदार मैचेस हैं। 17 को जो ये मैच है, ये ऑफ कोर्स पहला होगा ओपनिंग गेम, जो कि पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। हमारे यहाँ पे 2 दिन की छुट्टी होगी। पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स से मुकाबला करेगा। ये दोनों टीम्स जो हैं वो पेशावर फील करते हैं, अब वकार के थोड़ा सा बॉलिंग और होनी चाहिए थी इनके पास, और कराची क्लोज मैचेस हैं, उनको जीतना जरूरी है। कराची का मैं थोड़ा सा, मुझे उनके साथ सिंपथाइज मैं करता हूं, क्योंकि वो बड़े क्लोज मैचेस जीते हैं। लूप होल्स हैं इन टीमों में, ये 3 जो मैंने बताया ना, नीचे की टीम चीजें हैं, ये जो है इनका थोड़ा सा इशू जरूर है, दे हैव टू फिक्स दैट। चलिए, बहुत सारा एक्शन है, एंजॉय करेंगे। अभी तो सिर्फ 16 ही मैच हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की कवरेज आपने एंजॉय की होगी। विल टेक यू टू पिंडी नाउ एंड यू हैव फन ओवर देयर। अंटिल देन, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट। हरदम हरदम दम दम हरदम
stroke making of last night repeats itself. Bowling. And in the gap. Pulls this one straight to mid-wicket, over mid-wicket. Another wicket. What a shot that was. Taken an absolute beauty. Big appeal and given. And it's an excellent catch out there on the boundary.